Okay. So during last session, we had kept this into consideration, this particular question, and we have understood there will be 6 steps through which we'll be able to solve the question. Okay. First step, of course, we'll read the question and then we will make opening balance sheet, we'll prepare closing balance sheet. Of course, along with that, few ledgers as a working note is very important. Your debtors ledger, creditors ledger, and other ledger if any adjustment is there for those ledgers. So let me deal with first question, and slowly and gradually once you do few questions, your fundamental regarding single entry will be very strong. And honestly, to learn financial accounting, you need to have the strong base of single entry. अगर सिंगल एंट्री सिस्टम आता है तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है because which you learn throughout the year methodology you will be doing in one question journal ledger trial balance final account balance शीट सब एक साथ नहीं करना पड़ेगा which will see this question. So Mr. Bhopat Rao does not maintain proper books of account. From the following information prepared trading profit and loss and balance sheet for the year ending 31st March 2015. So this is my closing year. Okay. And the balance sheet as on 31st, the 1st April 2014. It's a part of question. So they have asked opening balance sheet also, and they're asking closing balance sheet also. So my question will go like this. I mean, my solution will go like this. Opening balance sheet, trading profit and loss account, trading account, P&L account, and closing balance. Okay. 8 to 10 lines का सब बना लो. Keep your format ready. Opening balance sheet around 8 to 10 lines. Then trading account 12 lines, 10 lines, 6 to 10 lines. P&L account 15 lines and balance sheet also 15 lines. Okay. इसके अलावा prepare cash ledger of 15 lines, creditors ledger of 8 lines and debtors ledger of 7 to 8 lines. याद रहेगा? ठीक है, ये 4 और वो 3 फटाफट ये फॉर्मेटिंग करो, then we'll proceed further.
Start with opening assets, plant and machinery, furniture, stock, debtors, all will come first and foremost. Opening balance sheet. Second effect, even though you give to the plant account, so for example, we'll write balance. Please don't write, it is just mere waste of time because there is no adjustment as such. How much? 1,40,000. Only to make you aware, I'm just putting this. तो कोई इफेक्ट नहीं है. Okay. Similarly, closing balance. We go to closing balance sheet. Plant and machinery. And closing balance will also come in the plant and machinery. $1,40,000. समझा आपने? फिर इसको क्लोज करेंगे तो भी वही आएगा. So it is just waste of time if you are making plant and machinery account. That's why I have not asked you to prepare plant and machinery account. I hope you must have understood the logic now. Yes or no, dear students? Similarly, if you go to furniture, it will have the same effect. Opening balance sheet, 10,000. यहाँ पे हमको स्पेस रखना पड़ेगा बिकॉज डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है. एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट 10,000. ठीक है. एक्चुअली इसके 4 इफेक्ट हुए, बट वो लेजर का मैंने पोस्टिंग आपको नहीं दिखाया. व्हाई? बिकॉज इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. नेक्स्ट, stock opening and closing. Yes, it will come at 2 places. किधर किधर आएगा बताओ? Where it will come? First and foremost in opening balance sheet. Subsequent effect कहाँ आएगा बताओ? सर तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट. तो लिटरली देखेंगे हर एक चीज का 2-2 इफेक्ट है. कहीं वो दिख रहा है, कहीं कहीं वो नहीं दिख रहा है. अदरवाइज फ्रॉम सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री वी आर फॉलोइंग. क्लोजिंग स्टॉक 60,000. Subsequent effect, training account, ठीक है. Okay, everything we are giving 2 effect. Debtors, opening balance sheet, and debtors ledger. Asset का डेबिट बैलेंस होता है, क्लोजिंग रिवर्स होता है, क्रेडिट होता है. Subsequent effect will be in debtors account. This is one type. Are you with me? ये सारे का
सारे पोस्टिंग्स आप करते जा रहे हो मेरे साथ? यस और नो? ओके। Then closing debtors, closing balance sheet, and closing ledger. Debtors 1,12,000. Closing balance 1,12,000. देख रहे हो ना, हर एक का दो इफेक्ट आ रहा है. That is how we are transforming them into single entry to double entry bookkeeping. And then only we will get their profit or financial position, asset and liability. Creditors उल्टा हो जाएगा. Opening balance sheet credit, liability. And creditors account credit side. By balance brought down. Yes, no? Liability means Yes, sir. credit. Credit balance brought down. Closing creditors 22,500. The closing balance sheet. And creditors ledger to balance carried down. Okay. Okay. Then we have investment. Investment is as good as asset. कोई चेंज नहीं हो रहा है बैलेंस, है ना? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे तो भी चलेगा. तो ऐसे ही आप लेजर बनाओगे, इट इज ऑफ नो यूज. चॉइस इज योर. ओपनिंग बैलेंस शीट, asset, investment 6% investment. Closing balance sheet also. ठीक है. और कुछ? Yes. Cash paid to creditor. What will be the entry? What will be the entry? Unmute कर रितेश. Cash paid to creditor. Creditors account debit to cash. Creditors account debit to cash. Creditors में to cash आएगा. Cash में by creditors आएगा. Cash में क्या आएगा? By creditors 1,98,000. सही है. Next, cash received from debtors. क्या इफेक्ट आएगा? Cash account debit to debtors. Cash to debtors. Cash में to debtors आएगा. Debtors में by cash. Any difficulties to understand all this? Is there any rocket science? Same thing what we have learned. Salary paid. क्या entry आएगा?
salaries account debit to cash balance. कैश. अगेन सैलरी अकाउंट बनाएंगे. सुनो, फिर तुम सैलरी अकाउंट बनाएगा, फिर उसका बैलेंस वापस पीएनएल में ट्रांसफर करेगा. इट इज नियर वेस्ट ऑफ टाइम. कैन वी राइट पीएनएल टू कैश? पीएनएल में टू सैलरी लिख देंगे. हाँ या ना? Yes, sir. यू कैन सेव टाइम. कैश में क्या आएगा? पीएनएल में टू सैलरी लिखा, Yes, sir. कैश में क्या आएगा? बाय सैलरी. Buy salaries. ठीक है. नेक्स्ट, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, बोथ विल कम एज इट इज. रेंट एंड ऑफिस एक्सपेंस में भी वही आएगा. लेट मी गिव द इफेक्ट इन कैश फर्स्ट. बाय रेंट, बाय ऑफिस एक्सपेंस, है ना. हम दोनों के दोनों वापस पीएनएल में आ जाएंगे. टू रेंट, टू ऑफिस एक्सपेंस. यस और नो? Yes, sir. This is how we are giving to effect for every transaction. Drawing. Drawing to cash. Yes. कैश में क्या आएगा? बाय ड्राइंग. और ड्राइंग क्या होगा? कैपिटल में से माइनस होगा. will deduct from closing capital. Yes? Understood everyone? Next. अब क्या आएगा? सर ड्राइंग का कैश में क्या होगा? कैश में बाय ड्राइंग होगा ना. ओके. एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस. क्या हुआ? कैश टू कैपिटल. यस और नो? Yes, sir. यस सर. कैश टू कैपिटल आएगा. कैपिटल में क्या होगा? ऐड. एडिशनल कैपिटल. फिर कैश सेल्स. कैश टू सेल्स. कैश टू सेल्स. सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? ट्रेडिंग में. बाय कैश सेल्स, है ना. नेक्स्ट, कैश परचेज. परचेज टू कैश. कैश में बाय परचेज आ जाएगा. and cash purchase will come here in trading. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Next, discount received. What will be the effect? What will be the penalty? Creditors account debit to discount received. गलत होगा. डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, रिसीवेबल नहीं है. कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड. अंडरस्टूड? वो होगा जब भी डिस्काउंट अलाउड किया क्रेडिटर्स को, तो मेरे को मिल चुका है. इट इज एन इनकम. Yes, sir. तो कैश डिस्काउंट रिसीव.
सॉरी इट इज डिस्काउंट रिसीव ना, बराबर है, क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव, creditors to discount received. Subsequent effect of discount received will come where? In P&L by discount received from creditors. Next, discount allowed. रिवर्स हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, P&L में डिस्काउंट अलाउड होगा, डेटर्स में बाय डिस्काउंट अलाउड, वन थ्री फाइव जीरो. रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, Sales return. Sales return. सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, डेटर्स में क्या आएगा? बाय सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड. सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? लेस फ्रॉम Trading. सेल, ट्रेडिंग, लेस फ्रॉम सेल. नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड, Purchase return. परचेज रिटर्न, लेस फ्रॉम परचेज. सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर्स, नेक्स्ट, कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश कहाँ आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट एंड कैश लेजर. Opening balance. तो ओपनिंग बैलेंस शीट कैश 20,000 and in cash ledger two balance drop down 20,000. Last, budget to debtors, P&L में two bad dates, debtors में by bad date. Okay. So everything which has happened throughout the year, opening and closing balances has to be considered. There are only one adjustment regarding depreciation. Machinery 5% and furniture 10%. Let us depreciate 5% of 140, 7,000. है ना? बचेगा कितना? 1,33,000 and 10% of 10,000, 1,000. बचेगा कितना? 9,000. So 7,000 and 1,000 is a depreciation. Second effect here in P&L. Anything else you do feel is missing here by reading the question? Yes, one thing is missing. That 6% investment is there from the beginning. तो उससे interest तो आना चाहिए. Yes, sir. 6% कहीं नहीं- interest. कहीं नहीं आया है. That means it is silent adjustment. इसे क्या बोलते हैं? Hidden और silent adjustment.
You need to give the effect. Okay? समझा? Interest receivable, outstanding income. कितना कैलकुलेट किया आपने? 5%, 6% of 50,000, 3,000. 3000. पूरे साल का लेना पड़ेगा मुझे, क्यों? क्योंकि ये तो पहले से था, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट वाज देयर। एंड सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। So this is one additional silent adjustment which was not there. Now just see whether your opening balance sheet has these items. Plant and machinery 140, furniture 10, stock 44, debtors 81, investment 50 and cash 20, creditors 27 or not. Right? Your trading account has opening stock of 44, cash purchase 25, trade purchase will come. Okay. Is there or not? Cash sales 35, return outward 45 and closing stock 60,000. Similarly, profit and loss account, salaries, rent, office expense, bad debt, discount, allowed depreciation on furniture, depreciation on machinery, interest, and discount. Is there or not? Please verify and let me know. Hey? है ना? Very good. And balance sheet, plant and machinery, furniture, stock, debtors, investment, additional capital, drawing, creditors. Hey? Okay. Cash, creditors, salary, rent, office expense, drawing, cash purchase, balance, debtors, cash, additional capital. Is there or not? Yes, sir. Thank you. Creditors, cash, discount, returns, opening and closing balance. Similarly, debtors, opening, closing, and cash, discount allowed, return, bad debt. Is there or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we have completed 4 steps. 5th step was what? We'll close all these ledger and we'll transfer these balances into trading profit and loss and balance sheet. And finally, we'll close all 3 which should tally. So close your data. Get me the total. I think credit total is more. How much you are getting? Debtors ka total. Credit side is 3,92,850. Absolutely right. तो अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या कहलाएगा? डेटर में जो बैलेंसिंग आएगा वो क्या कहलाएगा? Sir, credit sales. Absolutely right. Credit sales. And credit sales डायरेक्टली हम लोग कहाँ पोस्ट करेंगे? ट्रेडिंग लेजर में 3,11,850. Are you getting this value?
बहुत सिंपल है माइनस करना। 392 850 में से 81,000 माइनस करेंगे तो 311 850 आएगा। आर यू गेटिंग दिस वैल्यू? Yes, sir. Similarly, I will close the creditors. Get me the total. How much you are getting? मशीनरी क्लोज भी करेंगे तो कोई वैल्यू उसका मेरे लिए मायने नहीं रखता है। इट इज टोटल 140 here also total 140 तो फर्क नहीं होता। It will not transfer anywhere. Creditors में कितना आया? Quickly. We have 4 minutes only. Balance is 2,27,250. Balance is 2 lakh. No, balance is 2,02,250. Total is 227,250. Absolutely right. Yeah. Again, it's a balancing figure. है ना? Trade purchase will come in trading. समझ में आ रहा है? कैसे लेजर क्लोज करेंगे, उसके बैलेंसेस को ट्रांसफर करेंगे। कैश देखो, अगेन आई फील डेबिट टोटल इज मोर। 273 तो एक ही आइटम है, सबको ऐड करेंगे तो भी 273 नहीं आएगा। कितना आया कैश में बताओ? 21,600. The balancing figure we got 21,600. Where it will be transferred? Closing balance sheet. Closing balance sheet is absolutely right answer. $21,600 हो गया, सारा क्लोज हो गया। Now we'll close opening balance sheet. Get me the opening capital. Asset is more. We are on the 6th step now. We'll close, we'll transfer the opening balance, we'll close trading, we'll transfer the P&L, we'll close P&L, we'll transfer the next profit, or finally my balance sheet should tally. Yes or no? So we'll do it fatafat. Total of assets, sorry. 3,45,000. Sorry, कितना क्या बोला? 3,45,000. कैपिटल कितना आ रहा है? 3,18,000. That is my opening capital as a balancing figure. It will transfer into closing balance sheet as an opening capital. 3,18,000. समझा? Understood everyone? Yes, sir. Now close trading. Let me gross profit. Quickly, we have hardly minutes to left.
ठीक है, कितना है बताओ? How much it is? कितना है ट्रेडिंग का टोटल? जल्दी करो भाई, नेक्स्ट लेक्चर है। Gross profit 1,36,650. Absolutely right. हाँ? नहीं, same. Sir, 1,36,700. Yes. जल्दी बाबा, नेक्स्ट लेक्चर भी है तुम लोग का। तो नेट प्रॉफिट देखो इतना आएगा, नहीं आएगा तो मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में बताना। उसको ट्रांसफर करोगे तो ये वैल्यू आएगा और फाइनली तेरा बैलेंस शीट इतने पे टैली होगा। With this your sixth step is over. I know I was little fast today and many students ये थोड़ा बाउंसर गया रहेगा। The topic is such. अब जितना टाइम देंगे धीरे धीरे आप सीखेंगे। Don't worry. We will do few questions. आपको ग्रिप आ जाएगा। It's my promise. Don't worry. Okay. Can I wind up today? It's already 10:32. स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग टैली कर लेना। Even in the textbook, the same answers are there. Okay? Okay, sir. Bye. Take care. Bye, sir. Thank you, sir.